चिंता पिता आधा डायनेमिक्स और बता चैप्टर से मिस्टर से तशा स्पीकर फोर्स स्टडी करेंगे बने इन्हें मिस्टर से फिजिक्स ब्रांच स्टडी कीजिए mechanics is the branch of physics in which we study motion study करेंगे then mechanics मिस्टर से दो ब्रांच है जिसमें विषय kinematics विषय dynamics एक वर्ड का मतलब है चेतन इसलिए force करते हैं kinematics taking the study of motion without force मतलब मिस्टर से force न study करेंगे ठीक है और kinematics मिस्टर से कैसे how the motion is the motion da sarange circular motion da rotational motion da vibrational motion da so means yourself is a whole का सीखे the motion da sarange और dynamics में तो सिंपल स्टडी करी why the motion is the motion da वेले याच्या वजह ना force के वजह ना any cause of the motion force yes so the study of motion and its cause is called as a dynamics so that is for dynamics speaker okay padana mashe je misto se newton laws of motion study dele portion history kasi je awala galileo was 1630 solar system the david its object nature the object nature the hard object yo adatta to maintain its state of rest or motion. The object, the nature the khasiyat che object कोशिश को चीज़ परेज में देखो जैसे से एक डिस्टर्ब या कच्चे पे object motion से भी एक दा khasiyat che जहाँ हमेशा को motion से वही मोसे डिस्टर्ब वो देवे phenomena था देवे अमाल का मिस्टर inertia रहता ये या मक्षे न्यूटन जी किंदा पता कांसेप्ट बोले चार उतरा वो अखला फर्स्ट लाए डिराइव ठीक है न्यूटन से वो चकला पे वो बॉडी बोले एक्सटर्नल फोर्स जीरो वो बॉडी बोले चकला एक्सटर्नल फोर्स जीरो पता बॉडी शेवे एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन रेट जीरो है वो चकला मिसा एक्सेलरेशन जीरो है वेवेदेला मतलब शो कि दा वेलोसिटी से तुम्हारा दो को बॉडी से यानी स्पीड से तुम्हारा या फो जीरो दा या कांस्टेंट था एक्सेलरेशन पदवे किसमें से जीरो की दाइश तो सभी से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v by डेल्टा से वेलोसिटी जीरो भी है एक्सेलरेशन में जीरो भी वो या का पदा वेलोसिटी से चेंज न हो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ एक्सेलरेशन चाहिए जीरो नहीं पता दे सारे केसेस चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए जीरो है ठीक है ये जो वेलोसिटी जीरो कंप्लीट रेस्ट हुई वो चेकला वेलोसिटी कांस्टेंट भी यूनिफॉर्म मोशन से रहता बॉडी राउंड है द न्यूटन वो बखल के तो बसे वली कर चेक के तो हम का प्रिंसिपिया मैथमेटिका ठीक है अच्छा इंग्लिश तो से चूंकि फोर्स की दबी तो फोर्स पे घंटे बचा रहे फोर्स वी आई सी the physical quantity which move or tend to move a body यानी फोर्स inside a physical quantity तो सही physical quantity वो physical quantity किस तरह की चीज़ है ना तो वाइश all measurable quantities are called as physical quantities. The physical quantity though चे कोशिश को चेवा बॉडी ज रवाना या कोशिश को चेवा बॉडी ज स्टॉप टेंट म्हणजे कोशिश करना या युवा बॉडी stops or tend to stop a body from motion. युवा बॉडी को मोशन से दो कोशिश को चेजिए उदाहरण या युवा स्टॉप बॉडी को बताशी इमोशन वीडियो को बोले कोशिश ओके या दा कोशिश को चेंज और टेंड टू चेंज द वेलोसिटी कोशिश को चीज़ वेलोसिटी से तब्दीली होगा या हो कोशिश को चे ज तब्दीली को शुरू वाला वो यारे तब्दीली को शुरू वाला
change या तब्दीली रोवाली कुछ और tend to change the velocity या कोशिश को तब्दीली कुछ रोवाली यानी for example जब कोशिश का चे दा मेस से किंदा उगरा यानी फोर्स को लगाओ सही बोलो चार पटे फोर्स को लगाओ और दबाड़ी से तो शायद मोशन में लगेगा ठीक है और जो कोशिश का ठीक है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और सिस्टम इंटरनेशनल से फोर्स यूनिट है कि मतलब शायद न्यूटन कैसे बोलता हूँ न्यूटन द फुल नो में से निकला था ना पसमान से निकला था तब मतलब तगड़ी से conventions for units पास में इसको से शब्द तफसील से लगा शायद ये रहा चफला साइंस दान नो एज अ यूनिट में इस्तेमाल अभी ये इमेज को स्मॉल लेटर से वो सिंबल वे फॉर कैपिटल से और ठीक है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही जितना मिश युवा बॉडी बंदे फोर्स लगाई यानी फॉर एग्जांपल युवा बॉडी जो मासी m दा जितना पापन मिश फोर्स लगाई पर एक्सेलरेशन से एजुकेशन इंशाल्लाह दावा सेकंड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम से जब तफसील से गए वो दो तरह मिश से सही कि 1 न्यूटन सेमरा फोर्स का यानी मिश से दो तरह फोर्स यूनिट से न्यूटन जैसे न्यूटन मिश से डिफाइन करेंगे so 1 Newton is a force. The force which is applied to a body of mass 1 kg. 1 kg mass bondary force bolagi produces an acceleration. पता है acceleration तो को same acceleration 1 meter per second square. 1 meter per second square acceleration for 1 kg mass से चाहिए दोष पता होने में same force लगा हुआ है 1 Newton force से लगा हुआ है यानी 1 Newton is equal to 1 kg ज़रबे 1 meter per second square जैसे मतलब से 1 Newton 10 फोर्स का 1 kg बॉडी में लगा हुआ है ऊपर से acceleration 1 meter per second square तो ये तो ये दो so ये देखना तो से ट्राई प्राइस definition से जुड़ा हुआ है या definition में तो से ट्राई प्राइस यूनिट में लिखा है commonly मिस्टर से आम जैसे कि जो फोर्स टेस्ट करें मिस्टर से जो होता हो या यूशल चर सकावे या यूशल का देखो करता यानी तो शायद कॉमन मिस्टर से फोर्स टेस्ट है पुश या पुश या धक्का देना पुल या कैच करना फॉर एग्जांपल ड्रैग एच या यो कुर्सी कर सकता है या हैमरिंग अ नेल यो मेक का जब सेट ही हुआ है ठीक है सो दैट्स व्हाई मिस्टर से फोर्स अप्लाई करेंगे नोट other units of force kinetic procedure system से force unit है यो डायन जो डायन श्वास मतलब CGS system centimeter gram system अतः वजन का शोका बता सेंटीमीटर की विषय ग्राम में यानी तजेता में इसको 1 ग्राम बॉडी से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पे होगा मतलब जैसे हमारा फोर्स लगा हुआ है 1 डायन ऐसे फुट पाउंड so FPS system British Indian system से इस तरह दे force check में यूनिट तो अच्छा ही लो pound force करते हैं ये तो मुझे pound force करते हैं कचरे का इस तरह को 1 pound mass से 1 foot per second square acceleration पे यूज़ करते हैं इस तरह 1 pound force ओके दाखिल राज कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन 10 की पावर 5 डायन बराबर है सर बराबर है 10 की पावर 5 डायन 10 की डायन न्यूटन से किंदा 1 न्यूटन बराबर है 1 kg ज़रबे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो 1 kg द किलो से कितना यो प्रीफिक्स तो ये मुझे बने तो से लगा को 10 की पावर 3 ग्राम ज़रबे 1 मीटर से 7 सेंटीमीटर भी सो 100 सेंटीमीटर में इस तरह के लिखा है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मिली समझ लो 10 की पावर 3 सर 10 की पावर 2 है 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर वो दो टर्म्स में लिखे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दैन सर देता है बराबर है डायन बराबर
So ideally, pozwoli na myśl speciali kaishi, dasti power 5, wede pozwoli na myśl speciali kaishi, so 1 Newton barobar da 10 की power 5 times is equal to us.